हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइटवेट, इंटरप्टेड और जस्ट इन टाइम लैंग्वेज विथ फर्स्ट क्लास फंक्शन। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट पहले वेब पेजेस के लिए यूज होती थी। अब नोड ने उसको इतनी फंक्शनैलिटीज़ दे दी हैं कि अब हम उसे आउटसाइड द ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जस्ट इन टाइम लैंग्वेज जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मतलब होता है कि अ, ये ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस की तरह काम नहीं करती, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, जिसमें पहले कंपाइलेशन होती है देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। It will compile and execute program at the same time. That's why we call it a just-in-time language. And when we talk about first-class functions, so programming language is said to be first-class function when the function in that language treated like any variable. So इस लैंग्वेज में हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सो अगर आपको जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो डायरेक्ट राइट क्लिक करिए अपने ब्राउज़र पे एंड गो टू इंस्पेक्ट, और ये आप कंट्रोल शिफ्ट और आई की मदद से भी कर सकते हैं। देन गो टू कंसोल। सो हेयर यू कैन राइट योर ऑल जावास्क्रिप्ट कोड। सो हम बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को एज अ वैल्यू ट्रीट किया जाता है। सो हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बनाते हैं एक कांस्टेंट वेरिएबल, लेट्स गिव इट अ नेम a and we assign a function to it. So function, and here we console some value in our logs. Okay, so we give it as the first universal program script, hello JavaScript. Then we have to close this, and now we create a function. So if we call a as a function, then it will return this statement. So this will prove that we have some functionalities, as we can say that in we can treat the variable as a function, no sorry, functions as a variable. And if we call a over here, it will give the same result as the console log statement says. कंसोल लॉग स्टेटमेंट बेसिकली कंसोल में कुछ भी प्रिंट करने के लिए होती है। जैसे अभी हम कंसोल में हैं तो इसमें अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो वो हम इसमें स्ट्रिंग, इंटीजर या कुछ भी वैल्यू है तो हम वो उसमें पास कर सकते हैं। तो हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी पास द फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, सो इसमें हम फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में भी फंक्शन को पास कर सकते हैं। So let's create a function. First function like say hello, and we have to return hello over there. So we have make a function, then we have to create a new function, say greetings, and here we pass some values, hello, message, and name. So if we console
log this value, that hello message plus name, and we can pass this hello message dynamically through say hello program. So if we call greetings and we have to pass this function as an argument for this one, so we have to say that say hello and name as per your choice. So we have to pass some name like JavaScript, and we can close this. So it will give there is something wrong over there. Say hello. Okay, so there is a mistake. So we have to create this greeting function again. So we have to create a function, say second, and we have to pass the argument hello message and name. Then we have to console log hello message, and we have to call this variable. Then we have to pass the name, and now we call second function with say hello, and we have to pass like JavaScript, so this will work fine. It will say hello JavaScript now. So if we don't call this method, then it will just return the function, the proper function, and if we call with the parenthesis, it will return the result of the function, or it will invoke the function over there. So we have to take one more example, that how we can return a function. So if we create a function, say hello, and we have to return another function from there, and console log this hello, and we have to close this, and we have to close it again, so it will be done. So there are two ways to invoke this method, but what happen when if we call this method, say hello with the parenthesis, so it will return the anonymous function that will be inside the return statement. So how we can invoke this function? So basically there are two methods to invoke this function. If we assign this function to a variable, then we call
that variable, that will be fine. If say that if I make a variable, just I say as equal to hello, the parenthesis tail, and if we call as, then it will invoke the inner function and print this statement. And the second method is if we call the function with double parenthesis, then it will also invoke that function same as the variable. So this is something very basic information about the JavaScript. In further videos we can go dive deeper into the JavaScript and learn the JavaScript first before the React Native, because JavaScript के बिना React Native करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. So thank you guys, thanks for watching. Stay tuned, like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.